Hello guys, good morning and welcome to the last session of the day. चलिए हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं. So let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. Everybody knows about this, that today Unacademy is the largest learning platform of India. This is about me guys. On Unacademy you will get daily live classes. These daily live classes are very crucial and very important for your preparation of prelims as well as mains examination. So you should not miss the daily live classes that are happening on Unacademy. Then on Unacademy you will find structured courses. These structured courses are available on Plus as well as Iconic platform. And where if you are planning to give exam in 2021 and you are very serious about your 2021 attempt, then you need structured courses, structured study. Okay, please let me know, am I audible and visible to everybody so that I can proceed? क्योंकि कल हमने देखा कि ऑडिबिलिटी नहीं थी और मुझे वो पता भी नहीं था, like that, so that should not happen again. Very good morning Anupam, good morning Ramandeep, Georgie and Rahul Prajapati. सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर मंजिल, पाने के लिए चलना भी पड़ता है, जय हो गुरुजी. Yes Rahul, that's true, you are correct. I guess I'm audible and visible because no one is saying right. Okay, so on Unacademy you will get also live test. Like in the morning we conducted a live test of 12 questions from current affairs. Okay, then you will get unlimited access to each and everything, because everything that is happening on Unacademy, it is in recorded format. Then on Unacademy, these are the India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. I'm already one of them guys. Then when you take a single subscription of Unacademy, that single subscription is not of a single subject, but that is a subscription of UPSC CSE category. मतलब आप इस एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, एक सिंगल सब्जेक्ट का नहीं. That's why you will get access to all subjects of general studies mains. You will get access to all subjects of general studies prelims, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल कोर्सेज. मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका ऑप्शनल भी कवर होगा, सीसेट भी कवर होगा, एवरीथिंग. If you are going for iconic subscription of Unacademy, you will get a personal mentor, and this personal mentorship or this personal mentor will help you in planning your studies, scheduling your studies, and even under Iconic you can get your answers checked daily and regularly. तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी Iconic सब्सक्रिप्शन के अंडर हो जाती है. A 12-month Iconic subscription with SKUS code and 10% discount, you will be paying only 57,600, and a 24-month Iconic subscription with SKUS code and 10% discount, you will be paying 89,100 rupees. In case of Plus subscription, you will get access to all paid videos of Unacademy, which we are putting on Plus platform. A 12-month subscription normally costs you 44,000 rupees, but it will cost you only 39,600 because SKUS code will give you 10% discount. Okay guys, remember there is a price hike on 20 October. 20 अक्टूबर को प्राइसेस सब्सक्रिप्शन की प्राइस रेज होने वाली है, हाइक होने वाली है. सो इफ यू हैव इन माइंड टू टेक सब्सक्रिप्शन, यू शुड टेक सब्सक्रिप्शन बिफोर 20 सितंबर. जो मुझे मैसेज मिला है टीम की तरफ से, वो एग्जैक्ट मैसेज मैंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया हुआ है, आप लोगों ने वो देखा भी होगा. तो इफ यू हैव दैट इन माइंड, यू शुड गो फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर 20 अक्टूबर. मतलब लास्ट डेट 19 अक्टूबर है, तब तक आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा अगर लेना है तो, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो. In case of a 24-month subscription, instead of paying 64,000 rupees, you will be paying 57,600 because again SKUS code will give you 10% discount. Very good morning to everybody. So let's start our session. So we completed this part of the black hole, gravity, experimental evidence, quasar, event horizon, gravitational waves, everything in the yesterday's and in the morning session. Now we are going ahead with the MSP part. Now even in case of MSP, we discussed MSP do not have any legal backing. मतलब there is no law that mentions कि
farmers should get MSP for any crop. Second हमने देखा there are only 23 crops जिनको MSP गवर्नमेंट अनाउंस करता है. गवर्नमेंट is not legally bound to pay that much amount. And normally MSP जो होती है when government is purchasing products or crops or grains from the farmers, then only government agencies pay MSP. Private जो business person है they are not bound to pay according to the MSPs. Clear? तो हम कहाँ तक थे? We were here कि how exactly MSP is determined. So first thing that you need to remember is who is responsible for recommending amount of MSP. एक particular crop के लिए कितनी MSP होनी चाहिए, कितना minimum support price होना चाहिए, ये कौन recommend करता है? तो it is recommended by CACP, Commission for Agricultural Cost and Prices, CACP. तो first point, MSP do not have any legal backing. Second point, there are 23 crops जिनके लिए Government of India announces MSP. And number 3, on the recommendation of CACP, Commission for Agricultural Cost and Prices, Government of India announces MSP. ये 3 पॉइंट अब तक आपको याद रखने. Now, how exactly this CACP or Commission for Agricultural Cost and Prices determines कि how much MSP should be given to a particular crop? तो पहला पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है A2. A2 का मतलब क्या है? इट कवर्स ऑल कैश एंड इन काइंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फार्मर्स. मतलब A2 के हेडिंग के अंडर आता है आपका ऑल sorry guys, when you are living in a region which is surrounded by educated uneducated people, so such disturbances happen. No Sudha, it's not cabinet. So basically number 1 criteria देखिए CACP के. While determining the MSP of any crop, first CACP will consider कि फार्मर ने कैश में कितनी कॉस्ट इनकर की है. For example, we will take example of soybean. Okay, so suppose a farmer to sow soybean in 1 acre, he will spend close to 2000 rupees on seeds. Then he will spend close to 5000 rupees on fertilizer. He will spend close to 2000 rupees on chemical pesticides, plus he will spend हायर लेबर पे 1 एकड़ में वो नॉर्मली स्पेंड कर रहा है 1000 रुपीज एंड फ्यूल एंड इरिगेशन इसकी सबके मिलकर हम कॉस्ट लेते हैं ₹500. तो ये A2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 + 5 7, 7 + 2 9 + 1 10 and plus 500, 10,500. This is the cash that a farmer spent in 1 acre of the land to sow 1 acre of the soybean. 10,500 A2. This is the cash. Then A2 plus FL. FL का मतलब क्या होता है? The long form of FL is actual cost plus an imputed value of unpaid family labor. अब ये जो है ये तो फार्मर ने कैश में पे किया, बट दैट फार्मर्स फैमिली इज ऑल्सो वर्किंग इन द फार्म. लाइक वो फार्मर खुद काम करेगा, उसकी वाइफ काम करेगी, या जो भी फैमिली के मेंबर है वो जो काम कर रहे हैं उसका भी वो अनपेड फैमिली लेबर की वैल्यू कंसिडर की जाती है. तो A2 मतलब द कैश एंड इन काइंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फार्मर, प्लस FL मतलब अनपेड फैमिली लेबर, एंड प्लस C2 इसका मतलब है कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है कि जो लैंड है जिसमें उसने वो क्रॉप सो किया हुआ है, जिस लैंड में उसने वो क्रॉप सो किया हुआ है, उस लैंड में उस लैंड का भी तो कोई रेंट होगा, इवन इफ दैट लैंड इज ओन्ड बाय हिम, बट टू मेंटेन दैट लैंड
I'm extremely sorry, guys. So, first A2, it is the cash and in-kind expenses incurred by farmers. Second, unpaid family labor that farmer invested. And third, land rent. मतलब ये कैपिटल एसेट का है C2, C मतलब कैपिटल, उसका लैंड ओनरशिप है वो है, प्लस उसके पास अलग अलग टूल्स हो गए जैसे ट्रैक्टर हो सकता है, ये सब जो है A2 is just name or it has any full form. No, it does not have any full form. Okay, as of now we are not considering C2. Is it right, sir? Sudha, yes, we do not consider, but when CACP डिसाइड्स MSP और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब CACP देती है ना, तो उस टाइम दे डू कंसिडर दिस C2 हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, क्लियर? सो आई होप यू गॉट इट. अब मैं आपको फिर से पूछने वाला हूं फर्स्ट क्वेश्चन, हु रिकमेंड्स द MSP फॉर उससे पहले टेल मी वन थिंग, फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस MSP? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स? ये पहला क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन, हु रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस और MSP to government of India? This is the second. And third, please tell me the three criteria which are used by CACP, Commission on Agricultural Cost and Commission on Agricultural Cost and Prices. CACP वो कौन सी तीन क्राइटेरिया यूज करती है टू डिटरमाइन MSP? वेरी गुड. वन इज 23 crops, second is CACP, and the answer of third question is number 1, it is cash payment or cash amount that is paid. Okay, second criteria है family labor, जिसे हमने कहा unpaid family labor, and third criteria है capital asset. कैपिटल एसेट में आपकी सिर्फ लैंड नहीं आती, जैसे इफ दैट फार्मर हैज अ ट्रैक्टर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन कैपिटल एसेट. ठीक है, सो दीज आर द थ्री क्राइटेरियाज दैट आर यूज्ड बाय CACP इन डिटरमाइनिंग द MSP और मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ओके, A2 plus FL and C2. Next, again as I already told you, MSP do not have any statutory backup. MSP do not have any statutory backup, so CACP itself is not a statutory body. Again, for your preliminary examination, you need to remember that CACP is not a statutory body. Fine, and it came into existence in 1965, and the first crop जिसके लिए MSP अनाउंस की गई that was wheat. So in 1966 to 67 में we started the concept of MSP. The first crop जिसके लिए MSP अनाउंस हुआ वो था wheat, and it was the duration of Green Revolution. Can anybody tell me what is the name of father of Green Revolution in India and father of Green Revolution in the world? ये दोनों नाम आप मुझे बताओगे. So CACP is not a statutory body. It came into existence in 1965 and it started announcing MSP for wheat since 1966 to 1967. ये हो गया आपका MSP कैसे डिटरमाइन होता है. Few facts about the CACP. If CACP is not a statutory body, then what exactly CACP is? Okay, so basically guys, it is an attached office. CACP is an attached office of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So Ministry of Agriculture का ये attached office है. It is not a statutory body. याद रहेगा सभी को. This is a statutory body. This is not a statutory body. It is a attached office of Ministry of Agriculture. Very good. The father of Green Revolution in India, M.S. Swaminathan, and father of Green Revolution in the world is Norman Borlaug. Very good, Charchika. Very good. So that's it. So basically, this CACP, it can recommend MSPs, and decision, जो final decision है ना, that rest on the government. CACP is a recommendatory body. CACP is a recommendatory body means CACP ने अगर MSP बता दी, it is not compulsory to government of India,
to announce that particular amount. Clear? So one by one from this slide, only one fact you need to remember: CACP is not a statutory body. From this slide you need to remember only again one fact: CACP is a attached office of Ministry of Agriculture. We are going ahead. Okay, one very important point before we go ahead with that point, tell me one thing. किसी ने मुझे ये क्वेश्चन भी पूछा था, व्हाट्सएप पे पूछा था, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफआरपी एंड एमएसपी. नाउ यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन एफआरपी एंड एमएसपी. हम बहुत ही अच्छे से शांति से इसे समझ लेंगे. बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस एमएसपी? आंसर इज 23 क्रॉप्स. आउट ऑफ दीज 23 क्रॉप्स हमने देखा था 7 + 7 + 5 + 4 था. हुआ ये 23, 7 + 7 14 + 5 19 + 4 23. आउट ऑफ दीज 23 ये 4 क्या थे? कैश क्रॉप थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो अनाउंसेस एमएसपी फॉर 4 कैश क्रॉप. उन 4 कैश क्रॉप में एक था कॉटन, दूसरा था शुगर केन, तीसरा था जूट और 4th था कोपरा. ये 4 कैश क्रॉप थे. अब हम बात करते हैं शुगर केन की. शुगर केन की भी एमएसपी होती है, बट द एमएसपी ऑफ शुगर केन इज नोन एज एफआरपी, नॉट एमएसपी. FRP is a subtype of MSP, guys. Okay, listen to this very carefully. FRP, fair and remunerative price and minimum support price. FRP is an example of MSP, but it is not MSP. मॉर्निंग रुद्रानी. तो फिर बेसिकली ये क्या है? सो फर्स्ट पॉइंट, FRP is given to sugarcane. Fair and remunerative price is given for sugarcane. This is first point that you need to remember. Second point that you need to remember is this is statutory, means FRP has some statutory element. FRP has some statutory element. As you already know, MSP do not have any statutory element or any statutory backing, but FRP, fair and remunerative price of sugarcane, it do have some statutory element. How? So under the Essential Commodities Act in 1966, one order was issued by Government of India. The name of that order is Sugarcane Control Order. What is the name of that order? Sugarcane Control Order. और ये ऑर्डर है 1966 की. दिस ऑर्डर इज इशूड अंडर Essential Commodities Act. That's why it has some statutory element. Some statutory element. SRIIT, yes, it is science and technology as well as agriculture. तीन दोनों हम कवर करने वाले हैं. आर्य. ओके, since this is your first session, you missed these things. We just discussed about the Nobel Prize. We just discussed about the black hole. We just discussed about the gravitational waves. We just discussed about the orbit of Mercury, frame dragging. After that, gravitational lensing. ये सब हमने क्वासार, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है. ओके, यस, जल्दी आएंगी. ये PDF में एक साथ डालूंगा पूरी की पूरी, एक बार पूरी खत्म होने दीजिए. इंद्रजीत. ओके, आर्य SRIIT. तो हम एग्रीकल्चर भी कवर करने वाले, बिकॉज इस साल UPSC ने एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे. सो हम बात कर रहे थे कि FRP जो है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, इट हैज सम statutory element, that is through Essential Commodities Act. Fine. That order in turn provides for the fixation of FRP for cane during every sugar year. अक्टूबर और सितंबर के बीच में, अक्टूबर और सितंबर के बीच में FRP अनाउंस होती है. चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन इज अनाउंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्ट? उसका आंसर है आपका Essential Commodities Act. क्लियर यहाँ तक? सो डिड यू गॉट द difference between MSP and FRP? If anyone asks you from now onward or today onward, if anyone asks you what is the difference between MSP and FRP, will you be able to answer it properly? आप इसे सही से आंसर कर पाओगे?
Please tell me in the live chat. Then we are going ahead. So FRP is initially it was known as statutory minimum price. पहले इसे SMP कहा जाता था. कब तक? 2008-9 तक. ओके हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्हेन अ फार्मर is selling his crops to government agencies. When a farmer selling his crops to government agencies, तभी उसे एमएसपी मिलती है. याद रखिए यहाँ, एमएसपी फार्मर को कब मिलती है? चर्चिका, इट इज डिसाइडेड बाय सीएसीपी ओनली. एमएसपी फार्मर को कब मिलते हैं? व्हेन ही इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट टू गवर्नमेंट एजेंसीज. सपोज फार्मर इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट टू अ प्राइवेट businessman, so this private businessman is not bound to pay that farmer MSP. ये पहला. इंस्टेड एफआरपी की केस में देखिए, एफआरपी किसके लिए? शुगर केन के लिए. एंड दिस एफआरपी इज नॉट पेड बाय द गवर्नमेंट, इट इज पेड बाय द शुगर मिल ओनर्स. डिसाइड गवर्नमेंट कर रहा है FRP, लेकिन वो पे कौन कर रहा है? शुगर मिल ओनर. दीज शुगर मिल ओनर्स आर, यस अंजू देवी, FRP इज ओनली फॉर शुगर केन. FRP इज ओनली फॉर शुगर केन. यस, मिनिस्ट्री सेम ऑफ FRP. यस यस यस, दोनों में डिफरेंस समझ में आया. सो FRP इज नॉट पेएबल बाय द गवर्नमेंट एंड these sugar mills they pay FRP and they are supposed to pay farmers their bill within 14 days. They are supposed to pay their bill within 14 days. Okay guys, you got it. Thank you RIT CCEA. Fine. चलिए, ये वाला स्लाइड क्लियर हुआ. इस स्लाइड से आपको 2 पॉइंट याद रखने. नंबर 1, FRP दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, बट इट इज पेड बाय शुगर मिल ओनर. FRP इज पेड बाय शुगर मिल ओनर्स. ओके, ये पहला पॉइंट. एंड सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, FRP इज should be or whatever amount of a sugar, that price should be paid by the sugar mill owner within 14 days of cane purchase. Within 14 days of cane purchase. These are the two important points that you need to remember from this slide. हाँ, अनुपम अधिकारी, other crops do not have FRP because the farmers who produce other crops, they do not have their strong हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन. लाइक शुगर केन फार्मर जो है ना, वो जितनी स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, उनकी जितनी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, उतनी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन अदर फार्मर की नहीं है. मोस्ट ऑफ द शुगर केन फार्मर दे आर बिग फार्मर्स, बिग लैंड ओनर्स है. और जो बाकी क्रॉप्स है, सोयाबीन हो, पल्सेस हो, सीरियल्स हो, these are marginal or small farmers, so that's why they do not get FRP, they get MSP. This is a reality. Actually each and every crop should get FRP, and जब आप FRP कहोगे तो after that even private business owners should be giving that farmer money in the form of FRP. Correct? Got it? What is the penalty provision for mills, sir, as 8600 crore rupees is due to be paid? RASRIIT, basically these sugar mills are supposed to pay money within 14 days, but these sugar mills are owned by politicians only. That's why it is happening. Otherwise अगर strictly FRP या Essential Commodities Act implement होना start हुआ ना, तो sugar cane mills should pay penalty. There are many provisions जो अब हम यहाँ पे discuss नहीं करने वाले. Okay? सर, गवर्नमेंट MSP देके इंडिया के न्यूट्रिशनल लेवल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, बिकॉज मैक्सिमम फार्मर्स व्हीट और राइस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज उस पर MSP ज़्यादा मिलती है. कपिल हंस, इनिशियली आवर मेन focus was not on nutrition, our main focus was to deal with the hunger. Right now even you will find people in Jharkhand, Chhattisgarh or in tribal belt, these tribals they are dying because of the food. उन्हें राइस नहीं मिलता, इसकी वजह से उनकी डेथ होती है. तो our main priority is hunger.
or elimination of hunger. After that we can think of nutrition or nutritional level. Yes, government should treat each and every crop equally, not only wheat and rice, but wheat and rice, these are the staple crops of the most of the population. That's why government's main focus is on wheat and rice. Clear, Kapil? So इस आपकी इस क्वेश्चन का आंसर है मेन फोकस इज हंगर एलिमिनेशन एंड आफ्टर दैट न्यूट्रिशन. Okay, clear? So this is all about FRP, fair and remunerative price for sugarcane. It has statutory backup or statutory element, and it also it should be paid within 14 days after the cane purchase. Yes, food security is still first priority, Rudrani. Fine. Next news is the biggest problem in Delhi. Can anybody tell me what is the can Delhi people say winter is coming? जैसे आपके गेम ऑफ थ्रोन में these people are used to say winter is coming. Can Delhi people say winter is coming? And if Delhi people are saying winter is coming, in what sense they are saying winter is coming? Why would they say winter is coming? Because Delhi will experience worst form of pollution in winter. Delhi will become gas chamber in winter. Delhi will become or the condition of people with COVID will become more and more worse if they are staying in Delhi, because in winter season, because of the pollution, already दिल्ली में क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस सीवियर होने लगते हैं, और आपका ये कोविड तो रेस्पिरेटरी डिसीज ही है, करेक्ट? सो बाय कीपिंग दिस इन माइंड, you already know one of the most successful chief minister of India, he is working so, उसने कितने इंटरेस्टिंग चीजें दिल्ली में की है. So he is also working to deal with the pollution, जिसमें उन्होंने odd even formula लेकर आए, बहुत सारी चीजें थी. This is the difference कि जब आपका educated, if you have a educated leader ना, he will speak about the solutions which are practical. He will never talk about taking gas. He will never talk about taking water from the windmills. He will never talk about blah 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 blah. He will talk about real solutions. Okay, so the problem of Delhi's pollution is because of number one, continentality. सबसे पहला प्रॉब्लम है दिल्ली का कंटिनेंटलिटी की वजह से. वहां पे जो एयर है ना वो मूव नहीं होती. इंस्टेड इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, the polluted air goes to the sea and good air comes back to city. That option is not available to Delhi. Second, everybody knows automobile pollution is worst in Delhi. Like आपको अगर पता होगा, हम देखते हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, दिल्ली में ये बहुत चलता है शो ऑफ. मतलब people want to, even if they have such a beautiful metro services, एसी चलता है मेट्रो में, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सर्विस है मेट्रो की दिल्ली में, बट स्टिल पीपल विल प्रीफर टू ट्रैवल बाय कार, बिकॉज अगर वो किसी शादी में जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार, इफ दे यूज मेट्रो, और वो अगर शादी में बोल दे हाँ मैं तो मेट्रो से आया हूँ, तो इमीडिएटली पीपल विल लुक एट हिम, अच्छा ये मेट्रो से आया है, इसके पास खुद की कार नहीं है, या फिर कार है लेकिन पेट्रोल डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है. सो स्टेटस की वजह से ऑटोमोबाइल पोल्यूशन इज टू मच इन दिल्ली. देन the third thing that is that makes Delhi pollution problem severe, the third thing is stubble burning in Uttar Pradesh, in Punjab and in Haryana. तो ये चीज तो दिल्ली के लोगों के हाथ में है, लेकिन ये कंटिनेंटलिटी का दिल्ली वाले कुछ नहीं कर सकते. ओके, दिल्ली वाले ये कुछ नहीं कर सकते. स्टबल बर्निंग पे अरविंद केजरीवाल और द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ही रिक्वेस्टेड Haryana, Punjab, Uttar Pradesh so many times to stop stubble burning. Now he came up with his own solution. The news was Delhi government is planning to spray biodecomposer in the fields. Yes, Kapil. So Delhi government is planning to spray biodecomposer in the field. This solution will turn straw and this stubble into manure, so farmers will not burn stubble. It will reduce the problem of pollution. It will reduce the problem of pollution in Delhi, plus it will give fertilizers or
न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, तो सॉइल हेल्थ भी मेंटेन होगी और आपका किसका प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा. सो दिस इज बायो डिकम्पोजर. सो फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यहां से आपको कुछ भी याद नहीं रखना. इस स्लाइड से यू नीड नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट दिल्ली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्प्रे बायो डिकम्पोजर्स in the fields to decompose the straw and stubble in the field. What you need to remember is this biodecomposer capsule is developed by पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली. दिल्ली में जो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे पूसा इंस्टीट्यूट कहा जाता है, इन्होंने ये बायोडिकम्पोजर कैप्सूल डेवलप की है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. मुझे उन 8 माइक्रोब्स के नाम पता नहीं चले, बट दिस इज ऑल्सो मोर देन इनफ. इन फ्यूचर इफ आई कम अक्रॉस द नेम्स आई विल एक्सप्लेन यू. सेकेंड पॉइंट you need to remember is this biodecomposer is composed of 8 microbes. This biodecomposer is composed of 8 microbes. Clear? और ये microbes है क्या? This is a fungi based liquid solution. Do you remember UPSC once asked a question on biotoilets? How many of you remember that question? And in that question UPSC gave one statement. That statement was in biotoilet we use fungal oculum. That statement was wrong because in biotoilet we use bacteria to decompose human feces. लेकिन यूपीएससी ने दिया था फंगल ऑक्यूलम, सो वो स्टेटमेंट रॉन्ग था. इन द सेम वे इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 के प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट केम अप विद द डीकम्पोजर स्पेयरिंग और डीकम्पोजर सॉल्यूशन टू डील विद द स्टबल बर्निंग. This decomposer contains 8 microbes which are basically bacteria. No, they are fungi. It is a fungi based liquid solution. याद रहेगा प्रीलिम 2021 के लिए that the biodecomposer solution is made up of fungi. चलिए आगे. फाइन, सो दैट्स इट. दिस बायोडिकम्पोजर वाला जो न्यूज था इसमें से आपको 2 ही पॉइंट याद रखने. इट इज अ मिक्सचर ऑफ 8 माइक्रोब्स. It will decompose stubble and straw and it is a fungi based liquid solution. We are going to the next. Guys, you already know the Nobel Prize for Medicine. Nobel Prize for Medicine is given for the discovery of what? आप लोग बताओगे मुझे. Please tell me the Nobel Prize for Medicine. This is given for the discovery of what? Then we will go ahead. Yes guys, quickly, I am waiting for your answer. For what Nobel Prize of Medicine of 2020 is given? For the discovery of what? ये बहुत बार हमने डिस्कस किया. मैंने आपको कहा है ना कि I will not allow you to forget anything that I am teaching which is important for your examination. No, यशस्वी CRISPR-Cas9 डिस्कवरी वो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री. Nobel Prize for Chemistry of 2020 is given for the discovery of CRISPR-Cas9 technique. Very good. Anju Devi, Rudrani, Sudha, Yashashri and Anupam. Not Yashashri, Anupam. Hepatitis C. Those scientists who discovered hepatitis C virus, they got the Nobel Prize for Medicine in 2020. And CRISPR-Cas9 वाला जो है ना, that is a Nobel Prize for Chemistry. Kapil. Okay. Clear? We are going to the next. Now this Nobel Prize in physiology or medicine was given to Alter, Houghton and Rice for the discovery of hepatitis C virus. You know already. और यूपीएससी ने अभी साइंटिस्ट के नाम पूछना बंद कर दिया है, तो नो नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट. ओके. हाँ, what you need to remember few facts about hepatitis C virus. You already know hepatitis is an infection of liver and it is caused by these viruses, hepatitis A, B, C, D and E. ये 5 viruses है, 1, 2, 3, 4 and 5. These are the 5 viruses जिनकी वजह से क्या होता है, hepatitis
होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी इज अ आरएनए वायरस। कैन एनीबडी टेल मी सार्स CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 जो है सार्स CoV-2 कोरोना वायरस, इट इज अ आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। एज जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हेपेटाइटिस सी वायरस इज अ आरएनए वायरस। यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर योर प्रीलिम्स। देखिए ये दोनों आपको प्रीलिम 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू that UPSC didn't ask a single question on COVID-19 and SARS-CoV-2 virus. That doesn't mean कि UPSC will not ask. It will definitely ask in 2021 at least one question on SARS-CoV-2. At least one question. So both SARS-CoV-2 virus as well as hepatitis C virus, they are RNA virus. We are going ahead. You already know, हमने सुबह ही मॉर्निंग में क्वेश्चन में किया था कि नोबेल प्राइज वाज आल्सो गिवन फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, और अभी हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए भी नोबेल प्राइज मिला है। एंड रिमेंबर देयर इज अ वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। आपका जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें हमने देखा था we do provide vaccine against hepatitis and that is against hepatitis B virus or hepatitis B vaccine। तो हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्वेंशन कब हुआ था, उसके लिए नोबेल प्राइज कब मिला, 1976 में। हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज कब मिला, 2020 में, ठीक है, क्लियर। सो रिमेंबर व्हाट एवर वैक्सीन वी गिव, सर PDF शेयर नहीं करते आप, अच्छा हिमांशु आज कर दूंगा, डोंट वरी, 1,00,000% आज मैं सारी PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली सब कुछ एक ही PDF में और हमारे सेशन कंटिन्यू चल रहे हैं उसी सेम PDF पे, इसलिए ओके। एक बार में ही पूछेंगे, बिल्कुल रमनदीप। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 21 में पूछेंगे, दे विल आस्क अ क्वेश्चन इन 2022 ऑल्सो। चलिए आगे, दिस इज इट, फाइन। देन रिमेंबर मोस्ट ऑफ द डेथ्स दैट आर कॉज्ड because of hepatitis they are mainly because of hepatitis C and hepatitis B। देखिए यहाँ पे 61.34 मिलियन डेथ्स 2015 में अकेले हेपेटाइटिस बी और सी इन दो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से वर्ल्ड में 1.34 मिलियन। इसका मतलब क्या होता है, 13 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। यस जवीर यादव, इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल्सो, दिस इज नॉलेज मैन, it is useful for anyone who is knowledge hungry। नहीं पक्का हिमांशु, अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं सारी PDF आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेपेटाइटिस बी एंड सी के बारे में। एंड अब वायरल हेपेटाइटिस यू ऑलरेडी नो, इट इज द व्हाट इज वायरल हेपेटाइटिस, इट इज अ liver inflammation caused by these many viruses। then these are also viruses which cause liver infection, you can see them। Then hepatitis A and B, they can be prevented by vaccine। Remember vaccine is available for hepatitis A and B, it is not available for C, okay, that's it। ये हो गया हमारे 7th अक्टूबर के करंट अफेयर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ 8th अक्टूबर अगेन। इन दिस केस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लैक होल ओनली, लेकिन यहाँ पे आपको एक नई कंसेप्ट पता चलेगी। नाउ आई एम गोइंग टू राइट फ्यू टर्म्स हियर, just you need to ask yourself, are you aware with this? Used in mains point, no, hepatitis वाला point no, not at all important for mains। अगर याद रहे तो आप कहीं पे यूज कर सकते हो, but not much important, ठीक है। Number 1, I'm just writing down the terms, just ask yourself whether you are well aware of these terms or not। First is black hole, second is event horizon, third is quasar, fourth is gravitational lensing, fifth is gravitational redshift, sixth is gravitational waves, seventh white dwarf, eighth neutron star, नाइन्थ, अच्छा ब्लैक होल हमने लिख दिया, ठीक है। यू आर वेल अवेयर ऑफ दीज टर्म्स। अब इन्हीं में थोड़ा डेप्थ में हम जा रहे हैं। नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगुलैरिटी। दिस सिंगुलैरिटी इज सच अ यूनिक एंड important concept। It's because of singularity we say black hole has infinite gravity
हमने कहा था ना, ब्लैक होल हैज इनफाइनाइट ग्रेविटी एंड नो मास। ये हमने कहा था, ब्लैक होल हैज इनफाइनाइट ग्रेविटी एंड नो मास, बट विदाउट मास ग्रेविटी इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए देख लीजिए one by one. I am talking about singularity. Einstein proposed in his general theory of relativity, which was given in 1915. You already know the special theory of relativity was given in 1905. So in 1915 general theory of relativity, Einstein proposed that जो भी उसने प्रपोज किया था, उसने क्या प्रपोज किया था, ब्लैक होल प्रपोज किया था कि यस ब्लैक होल एग्जिस्ट और ब्लैक होल्स आर फॉर्म्ड। जो ये कार्ल स्क्वार्चचिल्ड है, इन्होंने एक सॉल्यूशन पब्लिश किया और उन्होंने एग्जिबिटेड सिंगुलैरिटीज और पॉइंट्स वेयर फिजिकल क्वांटिटीज ग्रू इन्फिनाइटली लार्ज और वैनिश्ड। फर्स्ट पॉइंट अबाउट सिंगुलैरिटी, व्हाट इज सिंगुलैरिटी? Please listen to this very carefully. What is singularity? These are the points where physical quantities, for example, mass is a physical quantity, length is a physical quantity, time is a physical quantity. So what is singularity? It is a point where physical quantities grow infinitely. Physical quantities grow infinitely. We know black holes are formed when a star has massive mass. मतलब वो स्टार जब infinitely grow होता है, then that star will collapse under its own gravity and it will convert into a black hole. That's what we learned. इसका मतलब क्या है कि ब्लैक होल में आपको सिंगुलैरिटी मिल सकती है because black hole is something where a physical quantity called mass grew infinitely, but at the same time we said that black hole have infinite gravity and no mass. इसका मतलब क्या है? Either that physical quantity will grow infinitely, that is singularity, or that physical quantity will vanish. That physical quantity will vanish, that is singularity. What is singularity? A point where physical quantities grow infinitely or they vanish. This is singularity, and without singularity black hole cannot exist, because we know black hole is the only celestial object that has the largest mass in the universe. ब्लैक होल से ज्यादा मास किसी भी अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का नहीं है. दिस यू ऑलरेडी नो. No, not neutron star, not white dwarf, not normal star, not planet, not satellite. Nothing has mass greater than a black hole. Vanish का मतलब होता है रुद्रानी, they just disappear. Vanish का मतलब होता है they just disappear. Yes, we will not be able to see. Very good, Ramandeep. Vanish का मतलब ये होता है. I am not saying destroyed. Mass is not destroyed. That physical quantity is not destroyed, but that we cannot measure, we cannot see, we cannot feel that quantity. Singularity. आपकी singularity का concept और clear हो जाएगी. अभी इतना सभी को याद रहेगा. सभी को इतना याद रहेगा. What is singularity? It is a point where physical quantities grow infinitely large or vanish. Yes, Tanuja. Tanuja, correct. But initially they need to grow enormously. Next we are going. Today this is understood as the event horizon, the point of no return beyond which even light cannot escape the black hole's gravitational attraction. ये तो हमें already पता है. This we already know. We are mainly about to discuss singularity. हमें singularity discuss करनी. फिर से देखिए, a gravitational singularity. Listen to this very carefully. A gravitational singularity, or gravity is the deformation of space and time, right? So इसलिए उन्होंने term use की space time singularity. So whether you are saying space time singularity or you are saying gravitational singularity doesn't matter. So both are same, or simply singularity. So these three terms are one and same: gravitational singularity, space-time singularity, or simply you can use the word singularity. Singularity.
okay, is a location in space time. So singularity you will find in the fabric of space and time, like black hole you find in the fabric of space and time. So it is a location in space time where the gravitational field of a celestial body is predicted to become infinite by general relativity. Very important, समझाता हूं मैं, डोंट वरी. When general relativity or theory of general relativity says, when the theory of general relativity says कि दे क्या क्या कहा है इसने. नंबर वन, इन्होंने कहा that vacuum is made up of fabric of space and time. Okay, vacuum is made up of fabric of space and time. Okay, Indrajit, it was in news because three researchers who worked on the black hole, they got the Nobel Prize of Physics. Indrajit Yadav. Okay, it is the fabric of space and time. Second, इन्होंने ये भी बताया कि there is a depression in the space and time fabric that is known as gravity, and this depression depends on the mass of the object. ये भी हमें पता है. तीसरी बात जनरल रिलेटिविटी ने ये कही थी कि there exist so enormous objects or celestial bodies in the universe that they create such a depression in the fabric of space and time that the depth of that depression cannot be understood. मतलब in short उसने कहा था कि उसकी डेप्थ इनफाइनाइट होती है. अब जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, ग्रेविटी होगी. मतलब ग्रेविटी ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी इज इनफाइनाइट. और बाद में देयर आर डिफरेंट साइंटिस्ट. देखिए, जनरल रिलेटिविटी नेवर यूज्ड द टर्म ब्लैक होल. जनरल रिलेटिविटी ने बस इतना बोला था कि देयर आर सम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और सेलेस्टियल बॉडीज इन द fabric of space and time. They have such a enormous mass that their gravity is infinite, and because their gravity is infinite, even light cannot escape from the gravity of that object. बाद में different scientists worked on this theory. They studied it through mathematical equations and different observations, and then they said it is black hole which has enormous mass, which has infinite gravity. समझ में आया या नहीं? So singularity is a point where physical quantities grows enormously or vanish, or these are the locations in space and time where the gravitational field of a celestial body becomes infinite. याद रहेगा, 3 पॉइंट आपको सिंगुलरिटी के बारे में यहाँ पे पता चल गए. नंबर वन, these are the physical quantities, these are the locations or these are the points in the fabric of space and time where physical quantities grow infinite. Okay, second, these are the points in the fabric of space and time where physical quantities vanish, or these are the points in the fabric of space and time where gravity of a celestial body is infinite. Singularity. Gravity of celestial body is infinite. Singularity. कितना ब्यूटीफुल है ना गाइस, इट इज सो ब्यूटीफुल. ये कंसेप्ट इवन मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ रही है बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स टू यू. वी आर गोइंग अहेड अगेन गाइस. दिस इज सिंगुलैरिटी. ये लॉजिकल नहीं है. जब आप कोई भी फैब्रिक, लेट मी टेक द फैब्रिक. हाँ, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ही करके दिखाता हूँ ना, ऐसे ही लेते हैं इसे. ठीक है, ये रहा आपका फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम. अब इस फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम को मैं स्ट्रेच करता हूँ. इसमें जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो स्लोली इसका डिप्रेशन इस तरह से जाएगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट ये है तो यहाँ पे समवेयर यू विल फाइंड पॉइंट लाइक दिस, सिंगुलैरिटी. ये ऐसा लोकेशन है वहां जहां पे मास मतलब बियॉन्ड आवर इनफाइनाइटली कॉम्पैक्ट मास है. जरूर कपिल पढ़ाएंगे. जो मास है ना सिंगुलरिटी में, इट इज इनफाइनाइटली कॉम्पैक्ट. इन इंद्रजीत यादव, ब्लैक होल हैज इनफाइनाइट ग्रेविटी.
Black hole has infinite gravity. We use the term strong when we are comparing the gravity of black hole with other celestial objects. But otherwise, black hole has infinite gravity. This is the point of singularity. Everything is theoretical. ये जो आपको दिख रहा है ना, this is theoretical. No one went inside a black hole to observe singularity. But this is a logical. ये हमने ऑब्जर्वेशन के बेस पे बताया हुआ है. जैसे by observing earth from the ground, हम ये कहते थे पहले. Yes, very good, Rudrani Singh. Mass is infinitely small in a space. ठीक है, चलिए singularity. So that's it, guys. Ever since scientists first discovered the existence of black holes in our universe, we have wondered what could possibly exist beyond the veil of that terrible void. वो जो black hole है उसकी उस तरफ क्या है? तो उस तरफ क्या है? हम कह सकते हैं ना कि उसकी उस तरफ क्या है? सिंगुलैरिटी. उसके उस तरफ क्या है? सिंगुलैरिटी. और आपको पता है सिंगुलैरिटी में टाइम नहीं होता, स्पेस नहीं होती, लेंथ नहीं होता, डिस्टेंस नहीं होता, कुछ नहीं. देयर इज नो फिजिकल क्वांटिटी. एवरी फिजिकल क्वांटिटी विल जस्ट वैनिश. आपने इस पे कुछ मूवीज देखे होंगे. सिंगुलैरिटी की कंसेप्ट पे मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, बट देयर वाज वन मूवी बेस्ड ऑन द सिंगुलैरिटी कंसेप्ट. और you know what, guys, since I started studying these black holes, singularity, the different waves, gravitational waves, slowly I started to believe some facts which we consider as a superstition of Hindu religion. जैसे ग्रहों का हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है. It is possible, guys, if things are so deep, if things are so detailed. Yes, Rudrani and Kapil. Interstellar. Right. Clear? Singularity. So, what is a gravitational singularity? What is a gravitational singularity? A point in space-time where the laws of physics as we know them break down. जैसे law of physics says कि light needs 8 minutes to travel from one sun to earth. That law will break down. क्योंकि वहां पे टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. टाइम वैनिश हो गया है. टाइम क्या हो गया? वैनिश हो गया है सिंगुलैरिटी में. तो लॉ ऑफ फिजिक्स ब्रेक डाउन हुआ. सो क्या क्या है सिंगुलैरिटी? नंबर 1, इट इज द पॉइंट इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम वेयर फिजिकल क्वांटिटीज ग्रो एनॉर्मसली. दे ग्रो एनॉर्मसली. क्या बात है, ग्रेट इंद्रजीत यादव. ब्लैक होल के इस तरफ ये है तो ब्लैक होल के उस तरफ क्या है? यूपीएससी के क्वेश्चन है. राइट, वेरी गुड. So grow enormously. Second, this is a point in space and time, fabric of space and time, where physical quantities vanish. It is a point in the space and time where gravity is infinite. Gravity is infinite. What is singularity? Singularity is the point infinite. Singularity is the point in space and time where the laws of physics break down. लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक डाउन. ऑलरेडी आपको पता है ना कि न्यूटोनियन लॉज ऑफ फिजिक्स डू नॉट अप्लाई इन स्पेस. यस, रुद्रानी सिंह. अरे रजनी का सिंगुलैरिटी किसने बनाई है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगुलैरिटी? इट इज रजनीकांत. रजनीकांत ने क्या किया है? दिस इज द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम. और रजनीकांत ने इस फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है अपने 2 हाथों में. तो देखिए यहाँ पे सिंगुलैरिटी क्रिएट हो गई और ये रहा ब्लैक होल ऐसे ऐसे बाहर जाता हुआ, बड़ा होता हुआ, और ये ब्लैक होल की एंट्री. और ऊपर क्या है? हम उधर जाकर हमने देखा सिंगुलैरिटी के पास, तो अरे ये तो रजनीकांत ने पकड़ा हुआ हाथ रुमाल है, ये तो हैंकरचीफ है जो रजनीकांत ने अपने 2 उंगलियों में पकड़ रखा है. दैट इज सिंगुलैरिटी वेयर लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक डाउन. व्हाइट होल थियरी, पोर्टल बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, इसके बारे में स्टडी चल रही है. ये ओके, कपिल हंस should send रजनीकांत to observe black hole. No 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 no. वो बनाया ही उसने, तो उसे आप ऑब्जर्व करने कहाँ भेजोगे रजनीकांत को, है ना? ओके, जोक्स अपार्ट. So these are the things what happens in a gravitational singularity or in a singularity. So interestingly enough, these 2 questions have come to be resolved after a fashion with theoretical existence of something known as gravitational singularity. Okay, clear? क्लियर हो गया? अच्छा, सिंगुलैरिटी इज नॉट ओनली अबाउट ब्लैक होल, गाइस. सिंगुलैरिटी इज नॉट अबाउट ओनली ब्लैक होल. एक्चुअली
हम सिंगुलैरिटी को क्या कह रहे हैं? इट इज समथिंग वेयर फिजिकल क्वांटिटीज कैन ग्रो इनॉर्मसली बट रिमेन एट अ सिंगल पॉइंट। एक ही जगह पे रहते हैं, इतना ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है कि हम उसे सिंगुलैरिटी कह रहे हैं। लेकिन इनॉर्मस है, इनफाइनाइट है, इनॉर्मस और इनफाइनाइट है, इनॉर्मस और इनफाइनाइट है। बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी, singularity, enormous mass, enormous time, enormous distance, enormous length, enormous energy, enormous matter, boom, explode हो गया, explode हो गया, big bang। जैसे ये explode हुआ, this enormous energy, mass, everything started to expand। हम कहते हैं ना universe is expanding, कहते हैं या नहीं, यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। देखिए यूनिवर्स एक्सपांड हो रही है सिंस द बिग बैंग, क्योंकि बिग बैंग से पहले क्या था? सिंगुलैरिटी थी। बाप रे, मैं कहां लेकर गया आपको, एक्सक्यूज मी, मैं आपको कहां लेकर गया? आपको तो आंसर मिल गया। यूनिवर्स से पहले क्या एग्जिस्ट करता था? बिफोर यूनिवर्स सिंगुलैरिटी एग्जिस्टेड। क्या एग्जिस्ट करता था यूनिवर्स के पहले? सिंगुलैरिटी। सो इवन बिफोर बिग बैंग, दिस इज अगेन थियोरेटिकल, this is theoretical, that before big bang there was singularity and after singularity everything came into existence. No, singularity end हो गया तनुजा, singularity के बाद अब ये expansion चल रहा है। yes, it is still expanding। ठीक है, अब मिल गए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर। सो सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी और स्पेस और टाइम सिंगुलैरिटी इज अ लोकेशन, it is a location where the quantities that are used to measure gravitational field become infinite in a way that does not depend on the coordinate system. This is the definition of singularity. Sir, why does it depend on the coordinate systems? No, it does not depend on the coordinate system, Indrajit Yadav. That's what they are saying. A gravitational singularity is a point or location where the quantities that are used to measure gravitational field, ग्रेविटेशनल फील्ड मेजर करने के लिए जो भी हम क्वांटिटीज यूज करते हैं, दे बिकम इनफाइनाइट इन अ वे दैट दे डज नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हम यूज करते हैं ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस पर डिपेंड ही नहीं है वो। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई आई लव साइंस। ओके, हमें कितना डेप्थ में लेकर जाता है और हमें कितना खुद के बारे में नॉलेज या इंफॉर्मेशन देता है। ओके, clear? Now one very important thing guys, this is singularity, okay? This is singularity. सर जहां आप अभी पहुंचे हो ना, इसके बारे में स्ट्रिंग थ्योरी बात करती है, मल्टीपल डायमेंशंस, ग्रेट टू नो, आपको भी इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा मेरी तरह। यस कपिल, आई हैव इंटरेस्ट बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी, दैट्स व्हाई। Okay, you are asking why does not, that answer scientists are trying to find, Indrajit Yadav, कि why it is not depend on, does not depend on the coordinate system. Maybe it is because of the enormousness or infinity and the density, इतनी ज़्यादा डेंस है कि आप उसे मेजर नहीं कर सकते। चलिए मैं अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ओके, हैव यू एवर हर्ड कि मोटिवेशनल स्पीकर आपको कहते हैं कि यू हैव इनॉर्मस एनर्जी, कहते हैं आप में इनॉर्मस एनर्जी, यू कैन डू एनीथिंग, कहते हैं या नहीं? मोटिवेशनल स्पीकर कहते देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, राइट? ये मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं होल यूनिवर्स इज विद इन यू। गाइस, इन बेचारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये नहीं पता, वो तो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं you have enormous energy because this single point can कन्वर्ट into
hundreds and billions of galaxies if a single point, that is singularity, after Big Bang can convert into hundreds and thousands of galaxies, can't you simply become an IAS officer? If a single point can achieve Big Bang and become hundreds and thousands of galaxies, can't you become a simple IAS officer? अगर इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि ये पूरा एक यूनिवर्स नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी नहीं, इसने कितनी गैलेक्सीज बना दी, तो उतनी एनर्जी आपके पास नहीं है कि आप रात रात भर पढ़कर अपना ड्रीम अचीव कर सको। अगर इस सिंगल पॉइंट को ये पॉसिबल है टू क्रिएट हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, कांट यू मेक इट पॉसिबल टू बिकम एन IAS ऑफिसर? अगर इस सिंगल पॉइंट में हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, तो डोंट यू थिंक ऑल एनर्जी, ऑल पॉजिटिविटी, एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू ग्रेट इज विद इन यू? दिस इज बेस्ड ऑन द साइंस गाइज, व्हाट आई जस्ट सेड, दिस इज बेस्ड ऑन द साइंस। सो अगर आपको इतना भी, इफ यू हैव एन आयोटा ऑफ डाउट दैट यूपीएससी इज डिफिकल्ट, अरे भाई यूपीएससी है क्या, किस खेत की मूली है? हम सिंगुलरिटी पढ़ने वाले लोग हैं और हम यूपीएससी से डरेंगे? हाँ, इट्स यूपीएससी गई तेल लेने, बस वो तेल लेकर आए जो हमें हम डाइजेस्ट कर पाए, है ना। यूपीएससी तेल लेने चली जाए, लेकिन आते आते ऐसा तेल लेकर आए कि जो हमें डाइजेस्ट हो और हम एग्जाम क्लियर करें। मतलब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका हम आंसर दे सके। सो अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ गाइज यूपीएससी जितने भी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पूछती है ना, उन सबके आंसर आपको पता होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप खुद ही पे डाउट करने लगते हो कि वेदर आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली और नॉट, आप गलत कर देते हो, समझे। जब आप खुद पे डाउट करते हो ना, जैसे ये सिंगुलरिटी ने अगर डाउट किया होता कि अरे बाप रे मेरे एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा, इस सिंगुलरिटी ने टारगेट किया है कि मुझे एक्सपांड होना है, देखिए हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बना दी उसने। आपको तो बस IAS बनना है, तो बनोगे IAS। अब आपको याद रखना है सिंगुलरिटी टू यूनिवर्स। आपका खुद का नाम लिखिए, सचिन टू IAS बनो, IPS बनो, IRS बनो, whatever, IFS बनो, whatever your dream is. If this can achieve this, why can't you achieve this? You can easily do that. बस खुद को पता होना चाहिए कि आप कर सकते हो, और आज आपको पता चल गया that you can do। चलिए आगे। In other words, at singularity, it is a point in which all physical laws or laws of physics are not indistinguishable from one another, where space and time are no longer interrelated realities. Okay, Indrajit Yadav, answer to your question. हम कहते हैं ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और अपॉन टाइम। अगर आप डिस्टेंस, टाइम और स्पीड को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आप कैसे ये फॉर्मूले का आंसर निकालोगे? दैट्स व्हाट इट हैपन्स इन द केस ऑफ पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, कि यहाँ पे space and time are no longer interrelated realities. Space and time are no longer interrelated realities, but they merge indistinguishably and cease to have any independent meaning. So space को या time को वहां पे independent meaning ही नहीं है। अब थोड़ा हम शायरों वाले डेप्थ में जाते हैं। शायर वाले डेप्थ में, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट इन लव रियली, जेन्युइनली, यहां से प्यार हुआ था आपको या अभी भी है? कितने लोग हैं? ओके, आपने कभी ऑब्जर्व किया जिससे आप सच में, जैसे आपकी मदर है, आपकी मॉम है, यू आर पार्ट ऑफ हर बॉडी, हर सोल, आपको सिर्फ देखकर वो समझ जाती है कि वेदर यू आर हैप्पी, whether you are sad, whether you are facing some problem, आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। ये अलग बात है कि वो कभी बोलती नहीं है कि बेटा आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन योर माइंड, गोइंग ऑन इन योर माइंड, वो नहीं बोलती। Why?
बिकॉज मदर और उसका जो बेबी है ना, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, दे डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर आपके दिल के तार किसी के साथ इस तरीके से जुड़े हो, आप समझ जाते हो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पर्सन्स लाइफ विदाउट टेलिंग। सिंगुलैरिटी, अगर यस रुद्रानी, बिकॉज इट इज they are amazing because we are part of them, mother and baby, they are like singularity. so singularity में भी स्पेस और टाइम का वही होता है। कहते हैं ना वो गानों में, दो जिस्म एक जान, इट्स लाइक दैट। स्पेस एंड टाइम का भी सिंगुलरिटी में वही हुआ। स्पेस एंड टाइम दो अलग क्वांटिटीज है, लेकिन वो इतनी ज्यादा एक दूसरे में मर्ज हो गई कि आप उनको इंडिपेंडेंट मीनिंग ही नहीं रहा। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। This happened with me and UPSC. Strong connection, they know 9 months before anyone else. Yes, Ramandeep. So remember, सिंगुलैरिटी में स्पेस और टाइम का जो होता है ना, वही हमारा और मॉम डैड का होता है, वही आपका और किसी और का हो सकता है जिससे आप बहुत तहे दिल से प्यार करते हो। और अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है ना, he will ensure that you achieve your dreams like Amitabh does in सूर्यवंशम। वो मूवी का नाम पढ़ते सुनते ही बोलते ही मुझे हंसी आने लगती है, क्योंकि वो सोनी सब कौन सा चैनल है, एक सेट मैक्स समथिंग, उस पे हमेशा सूर्यवंशम लगा हुआ रहता है। ठीक है, चलो, आई होप यू अंडरस्टूड कि इन सिंगुलरिटी स्पेस एंड टाइम दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, they do not have any independent meaning. space and time को independent meaning नहीं है। this is singularity. so singularities were first predicted in general theory of relativity. तो general theory of relativity ने black hole predict किए थे, general theory of relativity ने gravitational waves predict किए थे, general theory of relativity ने singularities predict की थी, and theoretical black and यही singularities का prediction it came into the theoretical existence of black hole. ओके, चलिए, इसके बाद ये Schwarzschild रेडियस, फिर ब्लैक होल कंडीशंस, ये रेडियस, सिंगुलैरिटी, ये सारे पॉइंट अब हम कल करेंगे। रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो एट 11:15 AM, और इफ पॉसिबल वी विल डिस्कस एट 8 AM as well as at 11:15 AM. so that's it for the day guys. thank you very much for being here with me for such a long time. this is the those who are new student or old guys, this is my telegram channel. you need to subscribe to this telegram channel to get notes. Then follow me on Unacademy, dedicate your hats to me on Unacademy, and don't forget to use SKUS code for 10% discount on Unacademy. and remember there is a proposed hike, price hike 20 अक्टूबर को होने वाली है। तो अगर आपने सोचा है कि you are going to take subscription in this month, if you are planning to take subscription in this month, that is in October, अर्ध्या तो अच्छा, तो अब दादाजी को हीरा ठाकुर ही बुलाती होगी। हाँ, सीनू 8 AM को टेस्ट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। विच एग्जाम रुद्रानी, किसकी एग्जाम है सर? स्टीफन हॉकिंग के ब्लैक होल थ्योरी के बारे में पढ़ना। हाँ, हो आएंगे, स्टीफन हॉकिंग भी आने वाले हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू जॉर्जी। सो 20 अक्टूबर को प्रपोज्ड प्राइस हाइक है, तो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन इन दिस मंथ, देन गो अहेड एंड टेक सब्सक्रिप्शन बिफोर 19 अक्टूबर, अदरवाइज you have to give more money. ओके, रमनदीप कौर 7 अक्टूबर ऑनवर्ड हमने जो भी करंट अफेयर पढ़े हैं ना यूट्यूब पे, उन पे टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे आज हमने 12 क्वेश्चन कंडक्ट किए ना, उसके आगे वाले कंटेंट में मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच। वी आर मीटिंग टुमारो एट 8 AM on Unacademy learning app with a test